Exercise 1.3 trigonometry. Question number 2, part 9, 10, 11. 11 part है tan z1 plus z2. Tangent z1 plus z2 is equal to tan z1 plus tan z2 upon 1 minus tan z1 tan z2. Left hand side is proof करनी है. Right hand side solve tan z1 plus z2 is equal to sin z1 plus z2 and upon the cos z1 plus z2 is equal to expand alpha plus beta sin alpha plus beta as for complex number. The same method is equal to sin z1 sin z2 plus cos z1 sin z2 upon cos z1 cos z2 minus sin z1 sin z2. So we will divide throughout denominator and the numerator by throughout both the terms divided by cos c1 c2 and cos c1 c2 minus sin c1 c2 by cos c1 c2 cos c1 c2. So we have sin c1 cos c2 cos c1 cos c2 plus sin c1 sin c2 cos c1 cos c2. Similar cos z1 cos z1 cos z2 cos z1 cos z2 minus sin z1 sin z2 cos z1 cos z2. So this cut by this and this cut by this cos c1 hold cut by with whole term minus z1 cut by cos tangent. ठीक है. साइन डिवाइड नहीं हो रहा तो साइन z1 cos z1 tangent convert into tangent or replace by sin z1 cos z1 replace by tangent z1 and the sin z2 cos z2 in replaced by tangent 2. So we have tangent 1 sin z1 upon cos z1 tangent c1 and cos z2 कट हो गए. ठीक है. ओनली tan z1 plus tan z2 and 1 minus tan z1 tan z2 is the hence the left hand side is equal to the right hand side. So similar tan z1 minus z2 is equal to tan z1 minus z2 tan z2 1 plus tan z1 tan z2. 12th part है second. Question number 2. Solved by the trigonometric function. As we know, cosine alpha upon tangent is equal to sin alpha plus beta and cos alpha plus beta. So you have sin alpha and sin beta, sin alpha sin beta, cos alpha cos beta. So then is replaced by alpha plus beta is z1 minus z2 and z1 minus z2. So we will expand it sin alpha cos beta as sin z1 cos z2 minus sin z1 sin z2 cos z2 cos z1 cos z2 plus sin z1 sin z2 for cos alpha plus beta and sin चेंज हो जाते हैं. माइनस हो तो प्लस है एंड साइन का सिमिलर रहता है. एंड वी विल डिवाइड इट बाय बोथ by cos c1 cos c2 cos c1 cos c2. So we have now sin denominator से हम cos c1 cos c2 both side terms को divide करेंगे. Then we have get this cos 2 with this cos 2 cut by and this with divided both side this with this z1 and the tangent sin z1 cos c1 minus sin
z2 upon cos z2 whole term is divided by same method previous question में किया tan z1 plus whole term is cut by this and this two अल्फा पे डिवाइड भी हो सकता है प्लस इज इक्वल टू साइन z1 cos z2 upon cos z1 cos z2 minus sin z1 cos z1 upon cos z1 cos z2 this this cut by cos 1 cos 2 by cos 2 upon cos z1 cos z2 and cos z1 cos z2 plus sin z1 sin z1 sin z2 upon cos z1 cos z2 tangent this term is whole cut by this two so we have sin z1 cos z1 minus sin z2 upon cos z2 1 plus sin z1 cos z1 sin z2 cos z2 is replaced by as we know sin and sin alpha upon cos alpha is equal to tan alpha or any angle tan z1 minus tan z2 upon 1 plus tan z1 tan z2 so the left hand side is equal to the right hand side hence proof यह हमारा मैथमेटिकल मेथड 1.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट था फिनिश हो गया थर्ड इंशाल्लाह क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 है शो डेट साइन जेड बार कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू द साइन जेड कॉन्जुगेट भी कहते हैं इसे साइन के ऊपर जब बार आता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये स्पेशली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज इक्वल टू cos alpha is replaced z function is replaced by x plus iota y so we will expand it by the cos alpha cos beta formula in trigonometric functions in sin x cos iota y plus cos x sin iota y is equal to sin x cos के इक्वल होता है बिकॉज और सिंस वी नो साइन iota y is equal to sin hyperbolic y and cos iota y is equal to cos hyperbolic y conjugate both the side we get जब हम ऑफ करते हैं बार तो साइन चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है सो वी विल चेंज इट बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई के इक्वल होता है इज रिप्लेस बाय दिस टर्म टू आयोटा साइन आयोटा वाई sin hyperbolic y is replaced by sin iota y. As we know, cos alpha, cos minus theta is equal to cos theta. So we will replace the cos iota minus iota. So we will change here cos positive theta into minus iota y. And the sin, we know sin theta minus is equal to sin minus theta but here a sign this sign is replaced is shift in the angle of as minus iota y and the positive so we have get sin minus iota y is equal to sin z अब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है hence proof